गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है इंडिया मालदीव्स रिलेशंस। ये टॉपिक आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मालदीव्स ने रिसेंटली इंडिया के साथ डिस्कशन शुरू कर दिए हैं कि कैसे इंडिया की मिलिट्री प्रेजेंस जो है उस रीजन से कम की जा सकती है या फिर रिमूव की जा सकती है रादर। तो 75 इंडियन मिलिट्री ऑफिशियल्स वहाँ पर बेस्ड हैं अभी, जो इंडिया के रडार स्टेशन और सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट वहाँ पर ऑपरेट करते हैं। इंडियन वॉरशिप्स जो हैं वो मालदीव्स की एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को जो है पेट्रोल करके उनको हेल्प करती है। और लेकिन हुआ क्या है कि वहाँ पर जो है न्यू जो प्रेसिडेंट इलेक्ट आए हैं मोहम्मद मोज़ू, उनका की पोल प्रॉमिस था ये कि वो इंडिया के मिलिट्री को जो है वो मालदीव से हटाएंगे। और इंडिया ने अभी तक इस पर ऑफिशियली रिस्पांस तो नहीं दिया है कि वो क्या रिमूवल ऑफ ट्रूप्स करेंगे या नहीं। बस कंस्ट्रक्टिव अरेंजमेंट की उन्होंने बात की है। अब अगर हम देखें तो इंडिया जो है वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज़ थी जिन्होंने मालदीव्स को रिकग्नाइज़ किया था आफ्टर इंडिपेंडेंस इन 1965। मालदीव्स की जो है स्ट्रेटजिक प्रॉक्सिमिटी है वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया से, और ये एक हब बन चुका है कमर्शियल सी लेन्स का इंडियन ओशन में। और इंडिया की जो है ये एक पोटेंशियल भी देता है कि यहाँ पर भी मालदीव्स में भी एक थर्ड कंट्री की नेवल प्रेजेंस हो सकती है, जैसे कि चाइना। तो एक तरह से थ्रेट भी बन सकता है हमारे लिए। तो पॉलिटिकल रिलेशंस देखें तो बहुत ही पुराना कांटेक्ट है हमारा इनके साथ। इंडिया जो है वो उन्होंने प्रॉम्प्ट असिस्टेंस दी थी 1988 में। कू अटैम्प्ट हुआ था जब मालदीव्स में, तो ऑपरेशन कैक्टस इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने गवर्नमेंट ऑफ मालदीव्स को हेल्प किया था। इंडिया फर्स्ट जो है वो पॉलिसी रही है गवर्नमेंट ऑफ मालदीव्स की, लेकिन इंटरनेशनल इश्यूज़ में मालदीव्स जो है वो कंसिस्टेंटली सपोर्ट भी करता रहा है मल्टीलैटरल फोरा पर इंडिया को। बायलैटरल ट्रेड भी जो है वो बहुत अच्छा रहा है। 1981 में हमने ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया था इनके साथ। जो बायलैटरल ट्रेड है वो, उसमें जो ट्रेड बैलेंस है वो इंडिया के फेवर में है मोस्टली। डिफेंस कोऑपरेशन भी जो है, लार्जेस्ट नंबर ऑफ ट्रेनिंग जो है अपॉर्चुनिटीज़ हम मालदीवियन नेशनल डिफेंस फोर्सेस को इंडिया ही देता है। लगभग 70% ऑफ डिफेंस ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट्स इंडिया से ही उनकी होती हैं। सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपैट्रिएट कम्युनिटी इंडियंस की ही है मालदीव्स में। 25% उनके डॉक्टर्स टीचर्स जो हैं वो इंडियन नेशनल्स हैं। टूरिज़्म उनका 1/4 जो उनका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन टूरिज़्म का ही होता है। और इंडिया टॉप मार्केट है मालदीव्स के टूरिज्म की 2022 में। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ईस्ट चाइना सी। ये टॉपिक आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जापान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने रिसेंटली गूगल को कहा है कि वो जो ईस्ट चाइना सी में डिस्प्यूटेड आइलेट्स हैं उनके मैप्स को जापानीज़ नेम के साथ जो है रिप्लेस करें। तो ईस्ट चाइना सी एक आर्म है वेस्टर्न पैसिफिक ओशन की, ईस्ट एशिया में। ईस्टर्न कोस्ट ऑफ चाइना और साउथ वेस्टर्न कोस्ट ऑफ जापान के बीच में लोकेटेड है। कोरियन पेनिनसुला, चाइना, जापान, ताइवान जो है इसके बॉर्डर में या फिर इसकी विसिनिटी में आते हैं ईस्ट चाइना सी के। ये जापान सी को सुशिमा स्ट्रेट के साथ कनेक्ट करता है, साउथ चाइना चाइना सी को ताइवान स्ट्रेट के साथ कनेक्ट करता है। जो इसकी नदर्न एक्सटेंशन है चाइना और कोरियन पेनिनसुला की, वो येलो सी है। एक बेसिकली एक शैलो सी है ये, और यहाँ पर येलो रिवर, यांगसे रिवर जो है वो डिस्चार्ज होती हैं। वेदर मोस्टली यहाँ पर मानसून विंड सिस्टम द्वारा डोमिनेटेड है। यहाँ पर जो आइलैंड्स हैं ryukyu आइलैंड्स और डियाओयू आइलैंड्स, ये बेसिकली सोर्स ऑफ टेरिटोरियल डिस्प्यूट है चाइना और जापान के बीच में। इसी को ही जो है वो जापानीज़ नेम देने को जापान कह रहा है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली बोला है कि जो किसी बोरोअर द्वारा रेंट्स रिसीवेबल हैं उसको एक एक्शनेबल क्लेम माना जा सकता है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के द्वारा। ओके, तो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट क्या है? ये हमारी ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी बिटवीन लिविंग बींग्स जो है वो उसको गवर्न करता है। और ये इमूवेबल प्रॉपर्टी को इमूवेबल प्रॉपर्टी के ट्रांसफ़र को ही प्राइमरीली गवर्न करता है, लेकिन कुछ सेक्शंस जो हैं इसके मूवेबल प्रॉपर्टी से भी डील करते हैं। सारे सिटीजन्स के लिए अप्लाई होता है जो भी ये ट्रांसफ़र में इन्वॉल्व हैं। अब ये ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी होती क्या है उसकी भी डेफिनेशन दी हुई है इसमें। अब ये इसमें कहा जा रहा है कि अगर लिविंग पर्सनस ट्रांसफ़र कर रहे हैं प्रॉपर्टी फ्रॉम वन
टू मोर लिविंग पर्सनस आइदर प्रोफेशनली, आई एम सॉरी, आइदर प्रेजेंटली और इन द फ्यूचर, तो उसको हम ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी कहेंगे। अब इसके अंदर कंपनीज, एसोसिएशंस और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स भी आ सकते हैं। अब ट्रांसफ़र का मीनिंग क्या होता है टीपीए के अंदर? टीपीए कहता है कि ट्रांसफ़र मतलब ट्रांसफ़र जो है वो कई मोड्स का हो सकता है, जैसे सेल, मोर्टगेज, लीज, एक्शनेबल क्लेम, गिफ्ट और एक्सचेंज। और ये अप्लाई नहीं होता, ये ट्रांसफ़र तब अप्लाई नहीं होता जब तक कोई ऑपरेशन ऑफ लॉ ना हो, या फिर ये ट्रांसफ़र तब अप्लाई नहीं होगा जब कोई लॉ की वजह से, किसी सेपरेट लॉ की वजह से, जैसे इनहेरिटेंस, फॉरफीचर, इंसॉल्वेंसी, तब जो है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी का एक्ट जो है वो प्रोविज़न अप्लाई नहीं होंगे। ये जो है विल या फिर सक्सेशन के केस में भी अप्लाई नहीं होता। ओके। अब अगर इसके बाकी इंपॉर्टेंट प्रोविजंस देखें तो जो है सिर्फ जो वही लोग ट्रांसफ़र कर सकते हैं लॉफुल प्रॉपर्टी जिन्होंने लीगल एडल्टहुड जो है वो अटेन कर लिया है और उनकी फुल मेंटल कैपेसिटी है। ठीक है। ट्रांसफरर जो है उसको, ट्रांसफरी को फिजिकल पोसेशन देना होता है प्रॉपर्टी का। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी जो है वो डॉक्यूमेंटेड और रजिस्टर्ड होनी चाहिए अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज़ के साथ। और ट्रांसफरर जो है उसको लीगली ऑब्लिगेटेड होता है सेल्स एग्रीमेंट के टर्म्स हुए। ठीक है। अब परपेचुइटी के अगेंस्ट ये रूल है, मतलब कि समझ लो कि एक प्रॉपर्टी को एक अनबॉर्न चाइल्ड पर जो है वो ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं डार्क पैटर्न्स। ये टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए ही इम्पोर्टेंट है। तो कई लोगों ने कंप्लेन किया है कि कुछ एयरलाइंस जो हैं या ऑनलाइन ट्रैवल वेबसाइट्स जो हैं वो उनको ट्रिक कर रही हैं कुछ परचेज़ करने के लिए, जिसको हम डार्क पैटर्न्स कहते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने जो इंडिगो एयरलाइन है उनको अपनी वेबसाइट को फिक्स करने के लिए कहा है, इसलिए क्योंकि वो डार्क पैटर्न्स का इस्तेमाल करके कंज्यूमर्स के बिहेवियर को चेंज जो है वो इन्फ्लुएंस कर रही थी। अब ये डार्क पैटर्न्स क्या होते हैं? ये डिसेप्टिव डिज़ाइन टेक्निक्स होती हैं जो कि जानबूझकर वेबसाइट्स में या यूज़र इंटरफेसेस में डाल दी जाती हैं ताकि जो है ये जो कंज्यूमर है वो उसको कोई एक्शन लेने पे फोर्स किया जा सके। ठीक है। तो ये ह्यूमंस के जो कॉग्निटिव बायस होते हैं या फिर बिहेवियरल टेंडेंसीज होती हैं उनका इस्तेमाल करके ट्रिक या फिर मिसलीड करते हैं यूज़र्स को। ठीक है। एक फॉल्स एंड सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट कर देंगे, उनको शेम फील कराएंगे कि वो ये परचेज़ नहीं कर रहे हैं तो किसी वजह से उनको शेम फील कराई जाएगी। उनको सब्सक्रिप्शन में ट्रैप कर दिया जाता है। ठीक है। तो कंपनीज़ कैसे यूज़ करती हैं डार्क पैटर्न्स? तो समझ लो जैसे कि अमेज़ॉन है, वो आपने अगर उनकी अमेज़ॉन प्राइम सब्सक्रिप्शन ली हुई है तो उनको आपको अगर आप उसको कैंसिल करना चाहते हो तो उसको इतना मुश्किल प्रोसीजर बना देंगे कि आप सोचोगे कि रहने देते हैं इससे अच्छा, इतने मुश्किल प्रोसीजर से कौन जाएगा। ठीक है। जानबूझकर जो है डार्क पैटर्न्स का इस्तेमाल किया जाता है कि कंपनीज़ पैसा बनाती रहें। अभी सितंबर 2023 में डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने एक ड्राफ्ट गाइडलाइंस भी निकाली थी जिसके ऊपर कमेंट्स मांगे हुए हैं। अब अगर हम इसके की हाइलाइट्स देखें तो इसमें कहा गया है कि क्लियरली आइडेंटिफाई करना है, डिफाइन करना है उन टैक्टिक्स को जो डार्क पैटर्न्स को दर्शाती हैं और उसको फिर सेक्शन 18 ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में बैन करना है। अब डार्क पैटर्न्स को कैसे डिफाइन किया गया है? कोई भी डिसेप्टिव डिज़ाइन पैटर्न्स जो यूज़ किए जाते हैं इंटरफेस द्वारा, मिसलीड किया जाता है, ट्रिक किया जाता है यूज़र्स को, कंज्यूमर की ऑटोनॉमी को इम्पेयर किया जाता है, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट या अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस जो है वो की जाती है, एक फॉल्स सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट की जाती है डार्क पैटर्न्स द्वारा। ठीक है। तो ये जो है सारे प्लेटफॉर्म्स पर सिस्टमेटिकली अप्लाई कर दिया जाएगा ताकि वो यूज़ ना कर सके डार्क पैटर्न्स का। अब अगर हम देखें तो इंडिगो एयरलाइंस क्या कर रहा था, करता है रादर, इंडिगो की वेबसाइट जो है फॉल्स अर्जेंसी क्रिएट करती है। जब भी आप टिकट बुक कराते हो तो आपको एक एक्स्ट्रा फ़ी देने को वो कहते हैं 99 रुपीज़ से 1500 के बीच में, और आपको कहते हैं कि एक सीट को बाय करो आप अपनी को परचेज़ करने के लिए, क्योंकि सारी की सारी फ्री सीट्स तो जो है वो अनअवेलेबल हैं। ठीक है। इवन फ्री सीट्स जो 4-5 होती हैं उनको जो है एंड में कर दिया जाता है बॉटम ऑफ द पेज पे, ताकि उसको लोकेट आसानी से ना किया जा सके। ठीक है। और ये सब करते हुए जो है इंडिगो ये आपको नहीं बताता कि अगर आप कुछ भी परचेज़ नहीं करोगे, सीट को बाय नहीं करोगे, तो आपको जो ऑटोमेटिकली जो फ्री सीट है वो आपको असाइन कर दी जाएगी। ठीक है। तो इंडिगो जो है वो ये इस तरह के डार्क पैटर्न्स का इस्तेमाल करता है। तो जो है स्किप का जो ऑप्शन है वो जानबूझकर सबसे नीचे टॉप राइट कॉर्नर पे जो है वो डाल दिया जाता है और बिल्कुल टाइनी फॉन्ट के साथ, ताकि जो है उसको कंज्यूमर देख ना सके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। ये टॉपिक आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो निसार जो है वो
एक्सप्लोर करने लगा है अर्थ के फॉरेस्ट और वेटलैंड इकोसिस्टम्स को और कैसे वो ग्लोबल कार्बन साइकिल को इम्पैक्ट कर रहे हैं। तो निसार जो है वो एक लो अर्थ ऑर्बिट ऑब्जर्वेटरी है, जॉइंटली इसको नासा और इसरो ने डेवलप किया है। एक एसयूवी साइज सैटेलाइट है जो 2800 किलोग्राम की वेट की है। एल बैंड और एस बैंड दोनों जो है इसमें इंस्ट्रूमेंट लगे हैं, ड्यूअल फ्रिक्वेंसी है बेसिकली। तो इसलिए लगाए हैं ड्यूअल फ्रिक्वेंसी ताकि इसको जो है क्लाउड्स को हो, चाहे डे एंड नाइट हो, किसी टाइम पर भी ये डेटा कलेक्ट कर सकता है। इसरो ने इसमें एस बैंड रडार दिया है और जीएसएलवी लॉन्च सिस्टम दिया है और स्पेसक्राफ्ट भी दिया है इसको लॉन्च करते हुए। और इसके मिशन के ऑब्जेक्टिव्स ये हैं कि ये अर्थ के चेंजिंग इकोसिस्टम, डायनामिक सर्विसेज और मासेस, आइस मासेस को जो है वो मेजर करेगा। अर्थ के लैंड और आइस कवर्ड सर्विसेज को ग्लोबली जो है ये ऑब्जर्व करता है 12 डे इंटरवल पर। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं टियांगोंग स्पेस स्टेशन। ये टॉपिक भी आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चाइना ने रिसेंटली शेंजो 17 स्पेसक्राफ्ट जो है वो कंट्री का यंगेस्ट एवर क्रू जो है उसके थ्रू भेजा है टियांगोंग स्पेस स्टेशन में। तो टियांगोंग स्पेस स्टेशन एक मॉड्यूलर स्पेस स्टेशन है जो कि चाइना के नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने बनाया है। फर्स्ट स्पेस स्टेशन जो कि चाइना ने बनाया है इसको, और ये लो अर्थ ऑर्बिट में इसको प्लेस किया गया है और ये 2028 तक ऑपरेशनल रहेगा। स्मॉलर और लाइटर है ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से। लगभग 3 एस्ट्रोनॉट्स यहाँ पर जो है 6 मंथ्स का स्टे कर सकते हैं। और ये स्टेशन जो है इसका ओन पावर, प्रोपल्शन और लाइफ सपोर्ट सिस्टम होता है। चाइना ने क्यों बनाया अपना स्पेस स्टेशन? क्योंकि चाइना को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन प्रोग्राम से जो है वो एक्सक्लूड किया गया था यूएस द्वारा। 2011 में यूएस की कांग्रेस ने एक लॉ पास किया, वुल्फ अमेंडमेंट, जिसमें कि नासा को जो है प्रोहिबिट किया गया कि वो चाइना के साथ जो है वो कोऑपरेट ना करें विदाउट प्राइवेट अप्रूवल। ओके, तो इसीलिए जो है चाइना जो है वो उनको बहुत डिफिकल्ट बना दिया गया चाइना के लिए कि वो आईएसएस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इजेक्टा हेलो। ये टॉपिक आपके साइंस एंड टेक के लिए ही इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली इसरो ने रिवील किया है कि चंद्रयान 3 का लैंडर मॉड्यूल जो है उसने एक स्पेक्टेकुलर इजेक्टा हेलो लूनर मटेरियल का जो है वो बनाया है। तो इजेक्टा हेलो क्या होता है? मतलब कि जो जब जब हमारा विक्रम लैंडर साउथ पोल ऑफ द मून पर लैंड हुआ तो वहाँ पर जो लूनर सरफेस का रेगुलेट मटेरियल था वो इजेक्ट हुआ, उससे जो है रिफ्लेक्ट होके ये एनोमली क्रिएट हुई। ठीक है, तो एक जैसा धुंध जैसा सा एक आपका बन जाता है ना हेलो, वैसा वहाँ पर बना और एक इरेगुलर ब्राइट पैच जो है लैंडर के सराउंड में बन गया। ठीक है, तो इससे हमें ये भी पता लगता है कि लूनर मटेरियल कैसे बिहेव करता है ड्यूरिंग सच इवेंट्स। तो रेगुलेट होता क्या? रेगुलेट मतलब ब्लैंकेट या ब्लैंकेट ऑफ अनकंसोलिडेटेड सुपरफिशियल डिपॉजिट्स जो कि किसी रॉक को, सॉलिड रॉक को कवर करते हैं। एपी रेगुलेट क्या होता है? एक जो हमारे लूनर रॉक्स या सॉइल हैं उसको हम मून डस्ट भी कहते हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं सब सरफेस वाटर आइस मैपिंग प्रोजेक्ट। ये टॉपिक आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो नासा का जो ये स्विम प्रोजेक्ट है इसने रिसेंटली 4th सेट ऑफ मैप्स जो हैं वो रिलीज़ किए हैं। तो ये बेसिकली स्विम प्रोजेक्ट बेस्ट प्लेसेस जो है वो लोकेट कर रहा है मार्स के ऊपर जहाँ पर वाटर आइस को एक्सेस किया जा सकता है। ये प्रोजेक्ट जो है वो डेटा यूज़ कर रहा है सेवरल नासा मिशन से। 2 हाई रेजोल्यूशन कैमरास जो थे मार्स रिकॉनेसेंस ऑर्बिटर के, उसका इस्तेमाल करके फिर जो है हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग साइंस एक्सपेरिमेंट डेटा का इस्तेमाल करके जो है मैप्स बनाए जा रहे हैं। और इस जो न्यू मैप जो है इसमें पॉलीगन टेरेन दिखाई गई है, मतलब कि जब सीजनल एक्सपेंशन या कंट्रैक्शन होता है सब सरफेस आइस का मार्स के ऊपर तो उससे पॉलीगनल क्रैक्स बन जाते हैं, उसका भी जो है मैप इसमें दिखाया गया है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं सैटेलाइट इंटरनेट टेक्नोलॉजी। ये टॉपिक भी आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली रिलायंस जियो ने अनाउंस किया है कि वो इंडिया का फर्स्ट सैटेलाइट बेस्ड गीगाबिट इंटरनेट सर्विस लॉन्च कर रहे हैं। तो सैटेलाइट इंटरनेट वर्क्स वैसे ही वर्क करता है जैसे आपका सैटेलाइट टीवी वर्क करता है। तो बेसिकली इसमें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो है वो सैटेलाइट भेजता है स्पेस में जो कि अर्थ के आसपास ऑर्बिट करते हैं, और अनऑब्स्ट्रक्टेड जो है एक व्यू चाहिए होता है आपको घर पर जहाँ पर आप अपना जो है ये रिसीवर प्लेस करते हो और फिर आपको जो है ये सिग्नल्स के थ्रू इंटरनेट जो है वो दिया जाता है। ठीक है, लो अर्थ ऑर्बिट्स में सैटेलाइट स्पेस प्लेस की जाती हैं लगभग 250 से 2000 किलोमीटर्स के बीच में फ्रॉम अर्थ, और ये रेडियो वेव्स के थ्रू कम्युनिकेट करती हैं अर्थ के साथ। अब इसके एडवांटेजेस ये हैं कि एक सैटेलाइट डिश जो है वो कहीं पर भी प्लेस की जा सकती है, चाहे रूरल एरिया हो चाहे कोई रिमोट एरिया हो, और एज़ कम्पेयर टू अदर इंटरनेट ऑप्शंस चाहे ब्रॉडबैंड हो या आपका फाइबर ऑप्टिक केबल हो, इसमें बहुत ही कम या फिर नेग्लिजिबल ही नेटवर्क आउटरेजेस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं
पिचवाई पेंटिंग, ये टॉपिक आपके आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंटली आर्टिस्ट जो चेन्नई में है उन्होंने एक आर्ट एग्जीबिशन होस्ट की जिसमें पिचवाई पेंटिंग्स दिखाई गई हैं जो कि 350 साल पुरानी है। तो ये एक ट्रेडिशनल स्टाइल ऑफ पेंटिंग है जो कि स्टेट ऑफ राजस्थान में ओरिजिनेट हुआ और लगभग 17th सेंचुरी में इसको हम ट्रेस कर सकते हैं। और ये ओरिजिनेट हुआ नथद्वाड़ा टाउन में, राजस्थान के। और ये पेंटिंग्स बेसिकली लॉर्ड कृष्णा की लाइफ के स्टेजेस के ऊपर ही बनाई जाती हैं। स्टोन पिगमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है और ये पेंटिंग्स जो हैं हिंदू टेम्पल्स के बैकड्रॉप में भी जो है वो यूज़ की जाती हैं डेकोरेट करने के लिए। और इसके डिस्टिंक्ट फीचर्स हैं, इसमें हैवियर बॉडी और लार्ज इलोंगेटेड आइज़ यूज़ की जाती हैं श्रीनाथ जी की, मतलब कृष्ण जी की। और इस पेंटिंग्स को जो है वो बहुत ही डिटेल से फिल किया जाता है फ्लावर्स के साथ, एनिमल्स के साथ, ज्योमेट्रिक पैटर्न्स के साथ। ओके, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is India-Maldives relations. This topic is important for your international relations. Maldives has recently started discussion with India for the removal of military presence of India in this region. So around 75 Indian military officials are currently based in Maldives, and they are operating radar stations and surveillance aircraft there. The Indian warships also help Maldives to by patrolling the exclusive economic zone of that country. So, what are the reasons behind this removal of military presence? So, actually, the new president elect, Mohammad Muzu, he had promised rather, uh, during his during the poll campaign, that he would remove India's presence or Indian foreign troops from Maldives. But of course, this discussion has started, but India is yet to officially address this call for removal of troops. So, if we look at the relations between Maldives and India, then it goes back to 1965 when India was among the first to recognize Maldives after its independence. Maldives' proximity to the western coast of India makes it very strategically significant for us. It is situated at the hub of commercial sea lanes which run through the Indian Ocean. Also, it has the potential to allow a third nation's naval presence, for example, China in this area, which could be a drastic consequence for us, which could have drastic consequences for us. So, what are the political relations between us? So, we do not have any politically contentious issues where there is no border dispute or any maritime dispute between the two countries, and our relations are nurtured and strengthened by regular contacts. India was the first to provide prompt assistance during the 1988 coup attempt. Under Operation Cactus, Indian armed forces helped the government of Maldives in neutralization of the coup attempt. India first has been the stated policy of government of Maldives, and on international issues also, Maldives have been supportive of India in multilateral fora. The bilateral trade started with the trade agreement which was signed in 1981, and India Maldives bilateral trade is heavily in favor of India. India also provides the largest number of training opportunities for Maldivian National Defense Force, and about 70% of their defense training requirements are met by India. Indians are the second largest expatriate community in Maldives, and about 25% of doctors and teachers in Maldives are Indian nationals. Tourism also accounts for about one-fourth of GDP of Maldives, and India has remained the top market for Maldives tourism in 2022. So the next topic is East China Sea. This topic is important for your international relations. So Japan's foreign ministry recently asked Google to revert the map names of disputed East China Sea islets to only using Japan's names. So this is East China Sea is an arm of Western Pacific Ocean which is located in East Asia, and it is situated between eastern coast of China and the southwestern coast of Japan. The Korean Peninsula, China, Japan, and Taiwan lie within the border or in the vicinity of East China Sea. So it connects with the Japan Sea, with the Tsushima Strait, and South China Sea via the Taiwan Strait. So its northern extension lies between the mainland China and the Korean Peninsula, and it is the Yellow Sea. So it is largely a shallow sea, and the Yellow River and the Yangtze River discharge into the East China Sea,
providing the much needed fresh water and suspended particles. Weather is dominated by the monsoon wind system, and the two significant island chains, Ryukyu Islands and Diaoyu Islands, which are the source of territorial dispute between China and Japan, lie there. And this is what Japan wants. They want the Japanese names to be used on Google Maps. So the next topic is Transfer of Property Act 1882. This topic is important for your governance section. Supreme Court has recently said that rents receivable by a borrower can be assigned to a lender as an actionable claim as per the Transfer of Property Act of 1882. So what is TPA? So it governs the transfer of property between living beings, and it primarily deals with immovable property, but it also deals with movable property as well. Okay, so it applies to all citizens of India who are involved in this transfer. So according to this law, transfer of property is defined as the act of living person transferring property to one or more living persons, either presently or in the future. And of course, it also deals with companies, associations, and groups of individuals. So what does the term transfer mean under this act? So transfer means any form of transfer like sale, mortgage, lease, actionable claim, gift, or exchange, but it does not apply to transfers which occur through an operation of law, a separate law, like in case of inheritance, forfeiture, insolvency. It also does not govern property disposed through wills or cases related to succession of the property. So what are some other important provisions? So act specifies that only those who can lawfully transfer property can do so, and those who have attained legal adulthood, possess full mental capacity, can engage in transfer of property. So the transferor must also give the transferee physical possession of the property. It also deals with, this act also deals with transfer of property, and that it should be documented and registered with the appropriate authorities. Under the act, the transferor is legally obligated to meet all the sales agreement terms. A property cannot be transferred to an unborn child. Okay, so the rule against perpetuity applies in this case. So the next topic is dark patterns. This topic is important for your economy section. So many people have complained about airlines and online travel websites that they're tricking them into buying things they did not mean to. So for that, Ministry of Civil Aviation has told the low-cost airline Indigo to fix its website because they were using dark patterns. So dark patterns are deceptive design techniques which are used by interfaces to manipulate or deceive users into taking certain actions or making specific choices online. So basically they are unethical user interface designs, and they exploit cognitive biases and behavioral tendencies to trick or mislead users. These tricks also include creating a sense of false urgency, making people feel bad for not doing something, forcing them to take certain actions, or trapping them into subscriptions. For example, Amazon makes it very difficult. It makes it a multi-step canceling process for Amazon Prime subscription cancellation. Okay, so these dark or deceptive patterns downgrade the user experience to their advantage. So in September 2023 also, Department of Consumer Affairs sought public comments on draft guidelines for prevention and regulation of dark patterns. And what were the highlights of these draft guidelines? So these clearly identified and defined tactics as dark patterns, and they said that they will be banned under the Section 18 of Consumer Protection Act. So what are these dark patterns? So deceptive design patterns, designs which mislead or trick users by subverting or impairing consumer autonomy, misleading as advertisement or unfair trade practices, creating a false urgency. So all these dark patterns would be systematically banned from all platforms. So if we look at what Indigo was doing, so it was creating a false sense of urgency. So users were forced into believing that they have to pay an extra fee, otherwise all free seats are unavailable. They will have to purchase the seats separately apart from booking the ticket. Of course, they were not informed in a transparent manner that if they do not book the ticket, they do not purchase the ticket, purchase the seat, then the free ones would automatically be assigned to them. Okay, so they were this Indigo was using this interface interference, and the option to skip the purchase of ticket was placed deliberately at the top right corner, and it was displayed through a tiny font.
So the next topic is NASA ISRO synthetic aperture radar. This topic is important for your science and tech section. So NISAR is poised to facilitate the exploration of how shifts in Earth's forest and wetland ecosystems impact the global carbon cycle. So NISAR is a low Earth orbit observatory jointly developed by NASA and ISRO, and it's an SUV-sized satellite weighing 2,800 kilograms. It consists of both L-band and S-band synthetic aperture radar instruments. So basically, it's a dual frequency imaging radar satellite. So that's why it is able to penetrate clouds and collect data anytime at the day of or night. So the ISRO has provided with the S-band radar, the GSLV launch system, and the spacecraft. The mission aims to measure Earth's changing ecosystems, dynamic surfaces, and ice masses. NISAR will observe Earth's land and ice-covered surfaces globally with 12-day regularity. So the next topic is Tiangong Space Station. This topic is important for your science and tech section. So China has recently launched the Shenzhou 17 spacecraft and carried country's youngest ever crew to the Tiangong Space Station. Tiangong is a modular space station being constructed by China's National Space Administration. It is the first space station built by China. It is currently in low Earth orbit and it is expected to be operational until 2028. Tiangong is significantly smaller and lighter than the International Space Station, and it can accommodate up to 3 astronauts at a time for 6 months stay. Station will have its own power, propulsion, and life support systems and living quarters. Why does China have its own space station? Because China is excluded from the ISS program or International Space Station program. In 2011, the US Congress prohibited NASA from cooperating with Chinese counterpart without prior permission. This law was known as Wolf Amendment and makes it very difficult for China to participate in the ISS program. So the next topic is ejecta halo. This topic is important for your science and tech section. So recently ISRO has revealed that Chandrayaan 3 lander module generated a spectacular ejecta halo of lunar material. So this ejecta halo is basically was formed when Vikram lander of Chandrayaan 3 mission landed near the south pole of the moon, and the epiregolith material got ejected and it resulted in reflectance anomaly called the ejecta halo. So about 2.06 tons of lunar epiregolith was ejected at that time, and it created an area of 108.4 square meter around the landing site. This led to an irregular bright patch surrounding the lander called the ejecta halo. So this discovery also sheds light on the behavior of lunar material. So what is this regolith? Regolith is a blanket of unconsolidated loose superficial deposits which cover the solid rock, and epiregolith is the lunar rocks and soil or the moon dust. So the next topic is subsurface water ice mapping project. This topic is important for your science and tech section. So recently NASA's SWIM project has released its fourth set of maps. So this aims to locate the best places to access water ice buried under the Martian surface. So this project uses data from several NASA missions like the Mars Reconnaissance Orbiter, Mars Odyssey, and Mars Global Surveyor. And SWIM has used two higher resolution cameras of Mars Reconnaissance Orbiter. And for the first time, high resolution imaging science experiment data has also been used to provide the most detailed view of ice edges close to the equator of Mars. So, what are the highlights of this new map which have been released recently? So, they have displayed polygon terrain where the seasonal expansion and contraction of subsurface ice causes the ground to form polygon cracks within the Martian surface. Okay. So the next topic is satellite internet technology. This topic is again important for your science and tech section. So Reliance Jio has recently announced that they have successfully demonstrated India's first satellite-based gigabit internet service. So satellite internet works similar to satellite TV, and it's an it begins with an internet service provider sending satellites into space to orbit around the Earth. Then the ISP relies on signal routed through one of those satellites in low or high Earth orbit, and the receiver dish is placed at your home or business.
in a spot which is having unobstructed view of the sky as much as possible. So the most common method of delivering high speed satellite internet usually involves constellations of low earth or orbit satellites which are placed at a height of between 250 to 2000 kilometers above the planet, and the satellite orbits the earth and communicates using radio waves. So what are the advantages of it? So this satellite dish is provides for two-way communication, and it does not need telephone cable or lines also. And as compared to other internet options, there are fewer or negligible network outages in case of satellite internet. So the next topic is Pichwai painting. This topic is important for your art and culture section. So recently, artists in Chennai have hosted an art exhibition showcasing Pichwai, which dates back to 350 years ago. So Pichwai painting is a traditional style of painting which originated in the state of Rajasthan, and its history can be traced back to 17th century. It is believed to have originated in the town of Nathwada in Rajasthan, and its theme mainly features the various stages of Lord Krishna's life. The material which is used is the stone pigments, and these Pichwai paintings are often used to decorate the backdrops of Hindu temples. These paintings also have distinct features of a heavier body and large elongated eyes, with a broad nose of Srinathji, who is Lord Krishna. These paintings are often filled with details like flowers, animals, and geometric patterns, which are arranged in a symmetrical and balanced composition. Some of the famous Pishwai paintings are of Srinathji in black and gold, Ras Leela, Krishna with Radha, and Giriraj Pishwai, which depicts Lord Krishna carrying Govardhan mountain on his little finger. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.